Okay, so now we are going to start a mock interview for our student Rahul Pant, and this mock is for MRPL. So Rahul, first of all, tell us about yourself. Yes. First of all, I would like to thank for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Rahul Pan, and I am basically from Jhansi. That Jhansi is known for the Jhansi ki Rani city, and I have done B.Tech from HPTI in chemical engineering, and which was built by the uh, Britishers in 1921, and I passed M.Tech in chemical engineering from IIT Kanpur. Currently, I am doing PhD in chemical engineering from IIT Delhi, and my PhD topic is based on the polymers and the piezoelectric material and iron nanoparticles. And I have done B.Tech projects on the sulfur recovery unit, which was based on the supercloth 99 process. And my MTech projects was based on the wastewater treatment, where I have removed the toxic molecules like nitrate and perchlorate from water by the use of electrocatalysis. And I have done summer internship from Gas Authority of India Limited, in Pata plant of Uttar Pradesh, where I worked in the gas cracker unit, where ethane was converted into diethylene. My hobbies are listening the English songs and playing chess. Okay, Rahul. So PhD in what stage you are currently? Sir, currently I am in the fourth year. Fourth year. So I am I I am in process of two papers. It is in Okay, process. so have you published any paper up to now? Not yet, sir, but I have a some book chapter review in MTech. So two papers are in process. Maybe in 6 months or 1 year, it So will be then, published. how will you join this job if you are working on publishing your So, research paper? sir, now the time the government has changed the rules, so we can easily convert in IIT Delhi. It can be easily convert this PhD full time PhD can be easily converted into the part time. So I can join PSU or MRPL also, and I will complete my PhD simultaneously. Okay, but you know you are this PhD working on in Delhi and location of MRPL. So do you know the distance? How much far is it? Sir, it is approximately more than 1500 kilometers from Delhi. Then how will you manage? So so it can be managed, sir, like doing the simulation work, uh, and So did you it discuss with just your guide about this? I did not discuss basically at this time, but one of my lab mates, he got selected in IOCL, so he basically converted his PhD into the part time. So So the same why are you situation. in hurry of getting job? You can continue your PhD and after that you can go in job. So right now the conditions are like after within completion of the PhD, if I will get this job, then that will be very much helpful, because further there will be so much struggle to get job after the PhD. So that's why I want to join the MRPL at this time. Okay, so Earlier I was also preparing. So I was although having the plan to convert this PhD into the part time. So that's why in fourth did year, you appear for any other PSU also earlier? so earlier I appeared for IOCL, but I was not selected. That So do you have any plan for again plan preparing for IOCL or no, choosing sir, opportunity again? at this time, I don't have any plan. There is so much uncertainty in future, so I don't have any plan to go for any interview or any other PSU at this time right now. Okay, so you have spent 4 years in IIT Delhi. Yes, sir. How do you rate your this time duration? Sir, out of five, I can give sir five. It was a best experience of academic life.
every type of facility is available here, every research facility, and its academics is the best in India. So I can rate 5 out of 5. So here the environment is better. Academic, everybody So, in administration have will you seen any piezoelectric transducer? piezoelectric transducer. So I have seen the device which in which we just press the button rapidly, and it will just give the torch. It will just generate the light in the torch. So that What is was this used in principle earlier called? times. This principle is this is matlab, the stresses that mechanical stresses that is generated is converted into the electrical energy. So that is basically used in the piezoelectric transducers. And currently I am doing this piezoelectric material, this PBDF with TRFE, which can generate high amount of the electrical energy. I'm preparing here the device be used uh, which can be used for the energy generation in future for many applications. So basically, I'm using here as a polymer as the piezoelectric material, and which can generate the high efficiency electricity. So that's what I'm doing here. Okay. And currently also So, is I'm there working in something called piezoresistive material also? piezoresistive material. Uh, so piezoresistive material, sir, is like opposite of when we give the electric energy, it can generate आपने the आपने नहीं देखा है वहां पे stress. कुछ ऐसा? क्या सर? आपने कहाँ कुछ पे? ऑब्जर्व किया, कोई ऐसा मटेरियल देखा आपने कि जो पीजो रेसिस्टिव, मतलब अपोजिट, अगर हम बात करें एज यू आर सेइंग, तो Yes, अपोजिट sir. ऑपरेशन में काम करता हो पीजो इलेक्ट्रिक के? Sir, there were many polymers. Currently, I'm reading about these polymers only. So, अच्छा, क्वार्ट्स के uh, बारे में बताओ, क्वार्ट्स सुना है आपने? quartz, yeah, quartz is also the piezoelectric material. उसकी So, कुछ प्रॉपर्टीज बताओ, उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्या है वो, कैसे काम यूज होता है, कहाँ कहाँ पे? uh, quartz, sir, basically पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, और इसकी प्रॉपर्टी सर आपके लिए हाई इम्पोर्टेंट ऑप्टिक। नहीं है क्या वो कुछ? सर एक्चुअली आई एम वर्किंग हियर और मोर प्रोजेक्ट्स ना अदर प्रोजेक्ट्स लाइक iron nanoparticles. So here I am preparing such device which can collect the water in the dry environment like in the desert तो ये environment. आपको So प्रोजेक्ट एमआरपीएल में कैसे यूज हो सकती है, नॉलेज आपने जो गेन की so होगी sir, प्रोजेक्ट में? yes sir. So the NMRPL is having the many research projects in the polymers side. So the polymers that require various types of the characterization techniques like scanning electron, Fourier trans FESM, so Fourier electrons scanning electron microscopy, and HPLC, and different types of the instrument that I have the knowledge of AFM also, DSC, dynamic is अच्छा, scanning ठीक है, आप calorimetry. मुझे So ये different types. बताइए अपना, Yes, आपने कोई लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव बनाया अपने लिए? सर लॉन्ग टर्म इन पीएचडी, और सर आपका अच्छा लाइफ लॉन्ग टर्म। का लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव आप क्या देखते हो? अब से 20 साल बाद अपने आप को कहाँ पाते हो? Sir, after 20 years, I would like to see myself in such a position where I will have a lot of knowledge about the industries and the various research projects where I can work, and I will be working in a big matlab, in a big position of the company where I can do lot of projects. So I will be after learning lot of things, I can do the most of the projects in a limited time, and I will be progressing. So that's what I will look ओके, after 20 years. ओके सर, यू कैन कंटिन्यू निखिल सर. Hello, Rishabh. Uh, Hello, sir. Am I audible to you? Yes, sir. You are. Uh,
Tell me about your MTech project in detail. So, sir, my MTech project was based on the electrochemistry. So, this where in electrochemistry, I have taken the uh, double मतलब कि electrode setup, which is divided in the two cells, which is having a cathode and anode, where this cathode, the titanium acts as the cathode, and on this cathode on titanium, basically I have put this nickel manganese on the graphene oxide. Uh, it is act as the catalyst, and where in this cathode cell, I put this base water, which contains toxic molecules, nitrate and perchlorate. So after passing the current into it, this concentration of nitrate and perchlorate was reduced with the reaction of which absorb this nitrate, that convert this nitrate into the NO2, and NO2 goes to the mm, nitrogen, and the final project will be the nitrogen, and likely in the perchlorate also. So it goes like ClO4 to ClO3 and ClO3 to Cl. So the final products will be non-toxic in nature, and so this is basically the electrocatalysis process where we नहीं put नहीं ये the फर्स्ट ऑफ ऑल आप एज्यूम किए हैं कि उसमें वेस्ट वाटर में आपने परक्लोरेट लिया है ना, yes sir, राइट? yes फिर sir. नॉक्स कहाँ से आया? नॉक्स को आप N2 में कन्वर्ट कर, ये मतलब कहाँ से आया नॉक्स? जो NO2 कहाँ से आया फिर? So, sir, there were two different experiments. So, one was for nitrate and one was for perchlorate. So, both are like toxic molecules which can cause cancer. So that causes the problem of globinemia. So that ठीक causes है, the cancer. नॉक्स आपने नाइट्रेट का किया एक और इसका परक्लोरेट का किया, ठीक है, दो Yes, sir. एक्सपेरिमेंट किया आपने। Yes, sir. तो नाइट्रेट का किया तो रिएक्शन कैसे हो रहा है इसमें? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड करेगा, ये चार्ज मोल हटाएगा इसको, है ना, एट्रैक्ट Yes, करेगा sir. कैथोड एनोड में अलग अलग। तो क्या Yes, sir. रिएक्शन क्या कर रहा है, रिएक्शन कैसे कर दे रहा है आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड में? तो सर ये तो ये स्प्लिट जैसे कर रहा है, होता है। बॉन्ड को स्प्लिट करेगा ना, बेसिकली बॉन्ड को Yes. स्प्लिट करेगा इसमें। Yes, sir. हम्म? Yes, sir. तो होता क्या है सर कि I have used this catalyst nickel manganese on the graphene oxide. So where हम्म, this nickel 2 plus, this is nickel 2 plus which act as the reducing agent for this NO3. So हम्म, this will this will take one oxygen for a time being, and it will हम्म, form NiO, and so this NO3 will goes to NO2. So similarly, this process will keep going on. So this NO2 goes to then NO, and NO goes to nitrogen. So like this is the process, and this manganese will have the role. So like this, if this Ni2 plus will be deactivated, then this Mn can reactivate it by transfer of the electrons. So in this way, this bimetallic catalyst is working अच्छा, such ये that निकेल आपका निकेल कैटलिस्ट है और मैंगनीज क्या है, कैटलिस्ट सपोर्ट है। नहीं मैंगनीज मतलब निकेल और मैंगनीज both are bimetallic catalyst, and GO is the graphene oxide is the support. तो बायोमेट्रिक कैटलिस्ट है, तो आपका निकल में ही ऑक्सीजन कैसे आ रहा है, अटैच हो रहा है, और कैटलिस्ट टेक पार्ट कर रहा है रिएक्शन में। Sir, reaction may for a time being it's taking, and after that this oxygen will goes into the solution only. So there will be some oxygen evolution reaction will also keep going on. So तब तो like this आपका it's कैटलिस्ट तो जल्दी सैचुरेट हो जाएगा। so that's why this M and manganese is used. So if nitrogen Ni2 plus will get saturated, then this Mn role will comes into picture, and this Mn can give the electrons just to reactivate it. So this will keep going on, and so like this, then that will reactivate the catalyst basically. ओके, ठीक है। इंटर्नशिप कहाँ से किए हैं आपने? So internships are GAIL Pata plant, gas authority of India Limited, the GCU plant, gas cracker units. So गेल पाटा कहाँ, यूपी में है ना, कहाँ पर है? yes sir, UP में और yeah, near to Kanpur. कानपुर के पास ही में। क्या किए वहां Yes. पर आप, कब बीटेक के टाइम में किए So थे आप? हाँ सर, बीटेक के टाइम में 28 months. ठीक है, So 28 मंथ्स का, sorry, 28 days sir. 28 डेज का, 28 अच्छा। days. Yes. हाँ, So क्या किए थे? so sir, I was working in the gas cracker unit here.
where 4 lakh 800 metric ton per annum of ethane was converted into the 3 lakh ton per annum of ethylene. So there were this there were two sections. So there were hot section and the cold section. In the hot section, there were furnaces and the heat exchangers and the caustic tower and the quench tower were there. And in the cold section is basically containing the depropylized different types of the byproducts that were separated from the cold section. So the heart of the process is consist in the furnaces where the feed from the GPU gas processing unit was coming at 600 degrees Celsius and it was heated to the 800 degrees Celsius. And this cracking process was happening near to this furnaces, and this furnace was consist of basically convective section and radiative section furnaces. So after the reaction was going on this section only, and then further this processed gas was going in the steam drum and then quench tower uh, just to matlab, lowering the temperature. Uh, and after स्टीम that ड्रम it का was क्या काम है? sir costing स्टीम drum ड्रम, just to maintain the pH. स्टीम ड्रम बोले ना आपने, क्या बोला? Yeah, steam drum, sorry, steam drum, yes. स्टीम ड्रम का स्टीम क्या ड्रम में फंक्शन है? सर क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट करते हैं स्टीम और जो भी अदर वेपर्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए स्टीम ड्रम का यूज किया जाता है। पक्का श्योर है आप? ये करता है यस स्टीम सर। ड्रम? हम्म। सर वाटर को तो सेपरेट करता है और मतलब डिफरेंट फेस फेस को सेपरेट करता है बेसिकली कंडेंस करके, तो इस तरीके से। ये स्टीम डिस्टिलेशन नहीं है, ये स्टीम ड्रम है। सर स्टीम ड्रम है सर, डिस्टिलेशन तो सर पहले ही हो चुका है जब वो जीपीयू में आता है ना, तो गैस हाँ प्रोसेस मतलब यूनिट आप तो। जो बता रहे हैं वेपर वेपर ये होगा, ये स्टीम डिस्टिलेशन का पार्ट है। और मतलब जो बैच डिस्टिलेशन बोलते हैं। और अच्छा, फर्नेस के आउटलेट पे कितना टेम्परेचर था? सर आउटलेट था 800 डिग्री सेल्सियस एंड उसके बाद गेट वाज। स्टीम ड्रम के बाद स्टीम ड्रम के आउटलेट पे कितना टेम्परेचर था? स्ट्रीम ड्रम के आउटपुट में सर ऑलमोस्ट 300 के करीब। सर आई डोंट हैव टू एनी थ्री आइडिया अबाउट अच्छा, मतलब उसके आउट बाद क्या एस्टिमेट। रिएक्टर था है? उसके बाद रिएक्टर उसके होगा? बाद सर क्वेंच टावर था लास्ट में। नहीं, लास्ट क्वेंच में कौन टावर टावर होगा? उससे बीच में तो कहीं तो रिएक्शन होता होगा ना, रिएक्शन नहीं करना सर। है? सर रिएक्शन तो यहाँ हो चुकी ना फर्नेस के पास में, फर्नेस में यहाँ नहीं नहीं, पे सर फर्नेस तो रिएक्शन। आपका वो तो कंबीशन रिएक्शन हुआ है, कंबीशन रिएक्शन से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सर हाँ, क्रैकिंग हैपेंड ना, सो दैट्स व्हाई अच्छा। सो फाइनली मतलब क्वेंच टावर हम डालते हैं तो क्रैकिंग उसके क्या है, बाद एक्जो है या एंडोथर्मिक? सर एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्यों? बिकॉज वी वांट टू मतलब we want to separate the hydrogen from it and we need to give some energy to uh, break the bonds, so क्रैकिंग में that हाइड्रोजन was सेपरेट कर रहे हैं या हाइड्रोजन के थ्रू क्रैकिंग? मतलब क्रैकिंग में क्या हो रहा है कि इथेन है तो इथेन में सर वो इथेन को इथाइलिन में कन्वर्ट कर रहा है तो टू हाइड्रोजन निकल रहा है, so basically step we break the bond between the hydrogen and the carbon, so इथाइलिन क्यों बना रहे हैं यहाँ पे? sir ethylene was इथाइलिन मे बी some knocking and anti knocking capacity बढ़ाने के लिए। um, एंटी नॉकिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए? ये क्या पेट्रोल गैस बढ़ा रहे हैं क्या? ये लोग बना रहे हैं क्या, पेट्रोल बना रहे हैं जो एंटी नॉकिंग है, क्वालिटी चाहिए उनको? सर इथाइलिन से सर बहुत सारे जैसे पॉलीमर्स वगैरह है तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं इसकी वजह से, तो इस वजह से इथाइलिन बना रहे हम्म। हैं सर। इथाइलिन मतलब वो तो है एज ए फ्यूल की तरह तो नहीं, मतलब इसका यूज बहुत सारे पॉलीमर्स बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग इथाइलिन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एमआरपीएल का चार पांच प्रोडक्ट का नाम बताइए।
MRPL का सर एक तो ATF है और और है सर हाई स्पीड डीजल, नेफ्ता है, नेफ्ता है, डीजल, केरोसिन है और बिटुमिनस है। विटामिन है, विटामिन है। विटामिन सॉरी। अच्छा, ठीक है। और गैसोलीन है, ये सर गैसोलीन। गैसोलीन बनाता है ना। ये सर गैसोलीन बनाता है जिसमें सर इथेन प्रोपेन। इथेन प्रोपेन क्या है? सर गैसोलीन, गैसोलीन प्रोडक्ट्स। गैसोलीन क्या होता है? सर गैसोलीन बेसिकली gas products that is ethane, ethylene, methylene, sorry methane. अच्छा, पेट्रोल क्या होता है? सर naphtha is the मतलब नाफ्था ही पेट्रोल है। पेट्रोल नहीं सर, naphtha की कैटेगरी में पेट्रोल आता है। नेफ्था के कैटेगरी में पेट्रोल आता है। अच्छा, ठीक है। पेट्रोल गैस, अच्छा पेट्रोल का क्या बीएससी का स्पेसिफिकेशन देखें आप? पेट्रोल का सर नहीं, कैसे नहीं देखा सर। BS6 क्या पता है ना, वो गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं आप? BS6, हाँ सर BS6 इसका सबसे अच्छा बी MRPL में BS6 सबसे अच्छा है, ऐसा प्रोफाइल में लिखा था BS6 सर। सबसे अच्छा है मतलब? It is producing the best PS6 products. अच्छा, हम्म, बाकी सर ठीक इसका है, आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। यस। ठीक है, ठीक है, मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ, है ना। यस। एमआरपी के बारे में थोड़ा देखिए, क्या क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का क्या क्या यूसेज है। यस और सर। गैसोलीन, गैसोलीन आपको पेट्रोल को भी गैसोलीन बोलते हैं, ठीक है। नहीं पेट्रोल की, अच्छा पेट्रोल को भी गैसोलीन बोलते हाँ, नहीं। पेट्रोल को भी गैसोलीन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक हाँ, तो ये मीथेन, इथेन, इथाइलिन, मिथाइलिन सब जोड़ने की जरूरत नहीं है उसमें, है। है। यस सर। ये सब कोई भी केमिकल का ना। और यस सर। नाफ्था एक अलग प्रोडक्ट है, ठीक है। यस। नाफ्था अलग चीज में यूज होता है, नाफ्था अलग ही प्रोडक्ट है। यस नाफ्था सर। इज नॉट, हाँ नाफ्था पूल यूज होता है गैसोलीन पर, आपका उसका ब्लेंड यूज होता है पेट्रोल बनाने में, लेकिन नाफ्था अलग से भी बिकता है, ठीक है। यस सर। और BS6 स्पेसिफिकेशन क्या है, ये आपका भारत स्टेज नॉर्म्स है, यस से सर। आपका रेगुलेशंस है, क्या यस कितना सर। कितना अमाउंट हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। यस सर। एनवायरमेंटल रेगुलेशन है ये दिस यस इज सर। बेस्ड ऑन द यूरो स्टेज, ठीक है। यस सर। तो BS6 से क्या क्या है, कितना हम लोग को सल्फर का रिक्वायरमेंट है, कितना अलाउ है, लिमिट कितना है, परमिसिबल लिमिट सल्फर का, हाँ एरोमेटिक्स सर। का, बेंजीन का, ये सब देखना है आपको, ठीक है। हाँ सर उसमें लिखा था कि सबसे कम मिनिमम सल्फर का प्रोडक्ट्स बनाए, MRPM में नहीं लिखा ये था। तो ठीक है, दैट वन। अल्ट्रा लो सल्फर बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं वो लोग, है ना। यस सर। तो वो तो कोई भी बनाएगा, वो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको एक्चुअली नॉर्म्स के अंदर रहना है, ठीक है। वो अगर यस सर। जो कोई क्या क्लेम कर रहा है तो अलग बात, बेस्ट बी एस यस। सिक्स बनाना है, कुछ मतलब नहीं है BS6 बेस्ट बनाना है नहीं बनाना है, लेकिन यस एज सर। पर BS6 नॉर्म्स बना रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। हाँ, यस सर। उसके बाद आपका इंटर्नशिप में आपने जो भी प्रोसेस देखा है, प्रोसेस को थोड़ा सही से देखिए, क्या क्या है, किसका यूज है। स्टीम ड्रम यस। आपका, हम लोग बेसिकली स्टीम ड्रम का जो यूज होता है, ये स्टीम प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। उसमें ओके हम ओके लोग सर। हाँ बॉयलर फीड वाटर लेते हैं स्टीम ड्रम में। और यस जो सर। जैसे तुम्हारा फर्नेस का आप बोल रहे हैं कि 800 डिग्री है, और उसका डाउनस्ट्रीम में हम लोग को उतना टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट रहता नहीं है बेसिकली आपका। यस सर। अ, कहीं भी रिएक्शन सेक्शन में जाएगा तो रिएक्शन उतना हाई टेम्परेचर में होता नहीं है, ठीक है। यस तो सर। उसका हम लोग का उतना टेम्परेचर हम लोग रिएक्टर में लेंगे तो रिएक्टर ही खराब हो जाएगा, मटेरियल खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम यस लोग सर। हीट रिकवरी करेंगे, है ना। हीट सर रिकवरी स्टीम करेंगे तो क्या ड्रम करेंगे, तो स्टीम। हम लोग स्टीम प्रोडक्शन करेंगे। यस तो सर। जो जो उसमें वाटर होगा, इसमें हम लोग टेम्परेचर जो हीट एक्सचेंज होगा, उससे आपका स्टीम प्रोडक्शन होगा, यस सर। ठीक है। तो वो भी एक एज ए यूटिलिटी यूज हो सकता है स्टीम, है ना। यस सर। समझ में आया?
क्या है वो जी स्टीम सर सर स्टीम को सर यूज करते हैं हीट एक्सचेंज के लिए, ऐसा बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, स्टीम को यूज स्टीम तो स्टीम का यूज नहीं बोल रहा हूँ मैं, वहाँ स्टीम प्रोडक्शन का बात बोल रहा हूँ। यस सर, स्टीम बोल। स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यस जैसे आप सर। पानी कहीं रखोगे यस गैस सर। में, तो हीट होगा तो गैस निकलेगा, स्टीम निकलेगा ना। यस सर। तो ऐसे ही 800 डिग्री से अगर 300 डिग्री में हम लोग हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, तो सब हीट तो ये खाएगा ना, वाटर खाएगा। यस। तो यस क्या सर। है वो तुम्हारा हाई प्रेशर स्टीम निकलेगा, उसमें हाई प्रेशर निकला यस या सर। लो प्रेशर निकला, कुछ एक पर्टिकुलर प्रेशर का स्टीम यस। निकलेगा वहां से, यस। जो कि कहीं और यूज हो सकता है वो, एज ए यस सर। यूटिलिटी इन द रिफाइनरी, यस सर। दैट कैन बी यस यूज। सर। ठीक है, यस सर। यस। समझ में आया क्या है यस सर, स्टीम का? समझ। नाउ आई आप जो बोल रहे अंडरस्टूड थे, कि। आप स्टीम डिस्टिलेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, जो ये वेपर यस है, सर। एक्सचेंज है, ये सेपरेट है, ये है, वो है, वो अलग यस सर। किस्सा है जो भी है, ठीक है। यस सर। तो जो भी है, आ, ठीक है, यस जो सर। नहीं आ रहा है उसको नहीं बोलेंगे, ये तो सही रहेगा। बाकी जितना भी यस सर। इथिलीन, जैसे इथिन से इथिलीन बना रहे हैं, फिर क्या है इथिलीन का काम, उसका एप्लीकेशन ही यस। नहीं पता है, तो बना के क्या फायदा है ना। यस सर, ये बात तो। हाँ, तो यस ये सर। गैसेस वाला मैं ये लूंगा। तुम फिर इसमें यहाँ पर डीजल भी पता नहीं, रिफाइनरी वाला बात लिया है, फिर ये सब नहीं है। यहाँ पर यस इथिलीन सर। ऑक्साइड बना के इसको बहुत सारा अलग चीज बना सकता है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो वो सब देखिए क्या क्या एप्लीकेशन है इसका, इथेन से क्या क्या बन सकता है, इथिलीन से क्या क्या बन यस। सकता है, यस ठीक सर। है। और अपना एमटेक प्रोजेक्ट, बीटेक प्रोजेक्ट, और जो भी पर्टिकुलरली पीएचडी में कर रहे हैं, ये तीन चीजों को अच्छे से पढ़िए। यस हम्म, सर। यस सर। ठीक, ओके। ओके, थैंक यू सर, आई एम डन फ्रॉम माय हाँ साइड। राहुल, यस सर। एक तो इंट्रोडक्शन को थोड़ा शॉर्ट करो। यस सर, आई विल डू इट। और HBTI कानपुर बता दिया, सिर्फ उसको ये सब बताने जरूरत नहीं कि वो अंग्रेजों ने बनाया, किसने बनाया। यस। ठीक है, सिंपल बस कि मैंने HBTI कानपुर से बीटेक किया है, और यहाँ से मैं यस। एमटेक किया, और ये अभी PhD कर रहा हूँ यहाँ से। हॉबीज को यस भी स्किप कर सर। सकते हो, इसमें इंट्रोडक्शन वैसे ही लंबा हो रहा है। यस सर। लेकिन बताने के लिए चीजें अच्छी है ना, तुम्हारे पास एमटेक PhD सब कुछ है, तो वो अच्छा है, उसको बताना है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें हटा देना, ये ठीक है। यस सर। और बहुत ज्यादा डिटेल में शुरू में नहीं बता देनी सारी कि मैं ये कर रहा हूँ, उस पर कर रहा हूँ। वो तो बाद में जब इंटरव्यू होगा तो धीरे धीरे डिस्कशन होगा। यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। और दूसरा जो कहना चाहते हो उसको आराम से कॉन्फिडेंट होके कहो ना। जैसे यस सर। PhD कर रहे हो आप, जो कि सर PhD में करने अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो अभी तो टाइम लगेगा मेरे को 2-1 साल का। यस सर। तो उस 2 साल के बाद जॉब की कोई मतलब गारंटी तो है नहीं, जॉब मिले ना गारंटी मिले नहीं। उतनी जल्दी, है नहीं। यस सर। सर अगर अभी अल्टीमेटली भी जॉब मुझे रिफाइनरीज में या किसी मिड। पेट्रोलियम कंपनी में ही करने का मेरा मन है, तो PhD यस के सर। बाद भी मैं अगर ढूंढूंगा, तो अगर अभी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं जल्दी सेटल यस हो सर। जाऊंगा। यस सर। बिल्कुल बताओ उनको। और सर ये है कि यहाँ पे पार्ट, वो कहेंगे कि तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा 4 साल, तो वो बोलो कि सर ये पार्ट टाइम में कन्वर्ट होने का प्रोविजन है यहाँ पे, तो मैं ट्राई करूंगा कि यस सर। पार्ट टाइम में कन्वर्ट हो जाए। मेरे काफी और जो साथ के लड़के हैं उन्होंने भी किया हुआ है। यस सर। ठीक है। और सर वो वाली बात की गाइड से आपने पूछा कि नहीं, उसके बारे में क्या बोलूं? अ, हाँ बता देना उनसे कि सर जो मेरे गाइड हैं तो मतलब वो काफी कोऑपरेटिव हैं। यस सर। तो जो उनका मेन मतलब काम है कि भाई ये पेपर पब्लिश करने वाला, जो उस पर मैं काम को काफी स्पीड से कर रहा हूँ। यस सर। और बाकी उन्होंने कहा हुआ है कि अगर तुम्हें कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं पार्ट यस टाइम सर। कर दूंगा कन्वर्ट इजिली। यस सर। ठीक है, ऐसे बोला हुआ है दैट उन्होंने। टाइम। ये अभी यस मैंने सर। नहीं बताया उनको कि मेरा इसमें हो गया है, बट उन्होंने इन जनरल मेरे को बोला हुआ है ऐसा। यस सर। ऐसे बोल सकते हो। और ठीक है। सर आफ्टर 20 years वाला सर, हाँ तो आफ्टर वो वाला 20 years आंसर। बताओ कि सर मैं किसी बड़ी पेट्रोलियम कंपनी में लाइक MRPL किसी यस सर। अच्छी पोजीशन से, मतलब किसी अच्छे लेवल की पोजीशन पे रेस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे हो, यस और सर। मतलब अच्छी मेरे पास, उस वहां पे मैं अपने आप को देखता हूँ। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ जो बातें हैं वो कॉन्फिडेंट होकर बोलो आराम से, वहां पे कॉन्फिडेंस, घबराने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू में। यस अच्छे सर। खासे तुम एमटेक हो, PhD कर रहे हो, तो नॉलेज है। और जब तुमने पीडियो इलेक्ट्रिक के ऊपर काम कर रहे हो तो पूरा अच्छे तरीके से पढ़ो उसको ना, उसमें कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। एक्चुअली सर वो पीजो इलेक्ट्रिक में पहले काम कर रहा था, तो अब थोड़ा वो प्रोजेक्ट शिफ्ट हो गया, तो तो अगर दूसरे बोलोगे प्रोजेक्ट्स तो में फिर लग उसके ऊपर गया। वो पूछ सकते हैं ना, क्वार्ट्स के ऊपर। ये तो यस सर। बेसिक क्वेश्चन बन सकता है कि उसकी प्रॉपर्टीज बताओ कुछ जरा। यस सर। अब जो तुम काम कर रहे हो उस पे उनको नहीं ना, उस टाइम ना हो उनकी नॉलेज इतनी ज्यादा, बट ये तो कॉमन चीज है, इसके ऊपर तो पूछ ही सकता है कोई भी। यस सर।
थोड़ा तो सर आइडिया ले लो। मैं तो वही बोलूंगा जो कि अभी कर रहा हूँ, तो उसमें ज्यादा नॉलेज है, तो हाँ, वही बोल इनको पढ़ भी लो थोड़ा सा, क्वार्ट्स के बारे में, यस रोकल साल्ट के बारे में, यस सर। क्योंकि कॉमन है ना यस सर, कॉमन ये। है। हाँ, तो बाकी अपना पीजो रेसिस्टिव, पीजो इलेक्ट्रिक, अपोजिट इफेक्ट, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर तो पेट्रोल इसमें यूज होते ही है इंडस्ट्रीज में। यस सर। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में थोड़ा देखो, क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। यस सर, दैट आई विल ठीक है। डू। हाँ, यस सर। बाकी कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ाओ अपना, बस और कुछ नहीं। यस। और उसके अलावा जनरल क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं आगे, इसी तरीके के मिलते जुलते, तो यस घबराने की सर। जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, यस सर। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।